Everyone, this is Vaishnavi from Mathsphere 360, and in this video we will discuss exercise 2.2 of class 8th NCERT book, and the chapter name is linear equations in one variable. And in this exercise we will discuss question number 9, 10, 11 and 12 of the exercise, and the previous questions we have done in earlier videos. The link will be given in I button. Move to questions. The first question for today, that is ninth question of the exercises. The ages of Rahul and Harun are in ratio of 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? Means कि the present age of Rahul, when we will find the ratio between them, it is 5:7. Here we have to be very careful about that कि if the रेशियो इज़ गिवन, किसी भी क्वांटिटीज़ का अगर हमें रेशियो गिवन होता है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उसमें रेशियो के दोनों ही नंबर्स में मल्टीप्लाई एक वेरिएबल से करके हम उसकी रियल वैल्यू एज्यूम करते हैं. सपोज 5, राहुल्स एज विल बी 5x and Harun's age will be 7x. So I have assumed let the ages of Rahul and Harun be 5x and 7x. Now next, what they are saying कि 5 years later means after 5 years. So after not 4 years, after 4 years the sum of their ages will be 56 years. So if the present age of anyone is 5x, then after 4 years what it will be? 5x plus 4 years. If similarly, if the present age of someone is 7x, after 4 years what it will be? 7x plus 4. Now their sum is 56 years. That question is saying. So according to question 5x plus 4, that means the age after 4 years, and 7x plus 4, the age after 4 years, and plus is 56. So basically we have to add them. So in addition we will add variable to variable and constant to constant. So 5x plus 7x is 12x, 8 is equals to 56. Now 8 is adding here, after transportation it will subtract to 56 minus 8 is 48. 12 is multiplying over here, so after transportation it will going to divide. So 48 upon 12 is 4. So the value of x, we have find out the value of x, but they are not asking the value of x from us. They are asking the age, and age we have assumed age as 5x and 7x. So the answer will be also in years. ठीक है, तो x, the value of x is 4. So 5x, 5 4s are 20, and 7x, 7 4s are 28. So their ages, their ages are 20 years and 28 years. Now if we want to check whether our answer is correct or not, so when we are adding the age after 4 years, ages after 4 years, so we have to check, it must be 56. So we have to check the ages. So 20 years, if the age of Rahul is now 20 years, after 4 years it will be 24 years. Now age of Harun is 28 years, after 4 years it will be 32 years. Now add 4 plus 2 6, 3 plus 2 5, 56 years. So we are right, because question is also saying the ages after 4 years is, the sum of ages after 4 years is 56. So that's right. Now move to next question. The number of boys and girls in a class are in ratio 7:5. Number of boys is 8 more than girls number. What is the total class strength? So what they are saying, in a class there are boys and girls. Boys are 8 more.
8 more boys are there in girls, means the number of boys is more than number of girls, one thing, and how much it is greater, it is 8 more than girls. Now next thing is given ratio. Ratio is 7:5. So we have discussed in previous question what ki if ratio is given, so we will assume them as x, 7x and 5x. So because boys are greater, number of boys is greater, so the 7x is for boys and 5x for girls. We will see in the question. First boys are given, so therefore we will assume boys number as 7x, and after that the girls is written, so we will assume girls number as 5x. So similarly I have done here. Number of boys is 7x and number of girls is 5x. Now what they are saying कि number of boys is 8 more than number of girls, यानी कि क्या कि number of girls is 8 लेस देन नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कि अगर हम बॉयज़ के नंबर से 8 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें नंबर ऑफ गर्ल्स पता चल जाएगा, या फिर हम क्या करें, नंबर ऑफ बॉयज़ को पता करने के लिए नंबर ऑफ गर्ल्स में हम 8 ऐड कर दें, दो बात हुई। यानी कि मैं क्या कह रही हूँ, बॉयज़ माइनस 8 इज गर्ल और गर्ल्स प्लस 8 इज बॉयज़, और विच वन इज ग्रेटर, बॉयज़ इज ग्रेटर, सो बॉयज़ माइनस गर्ल्स इज 8। हम इनमें से कोई सी भी 3 इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं। इफ इट इज़ नॉट विजिबल टू अस, लेट मी डू दिस अगेन। बॉय माइनस 8 इज गर्ल, गर्ल प्लस 8 इज बॉय, और बॉय माइनस गर्ल इज 8। हम इस 3 में से किसी भी तरह से इस इक्वेशंस को लिख सकते हैं। ईच इक्वेशन इज सेइंग कि नंबर ऑफ बॉय इज ग्रेटर एंड हाउ मच इट इज़ ग्रेटर, इट इज़ ग्रेटर 8, मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ आर 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। यहाँ क्या कह रहा है कि बॉयज़, जब नंबर ऑफ बॉयज़ से हम 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे हमें नंबर ऑफ गर्ल्स पता चल जाएगा। यहाँ क्या कह रहा है कि जब हम नंबर ऑफ गर्ल्स पे हम 8 ऐड कर देंगे तो हमें बॉय पता चल जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज़ पता चल जाएगा। यहाँ क्या कह रहा है कि जब हम नंबर ऑफ बॉयज़ से नंबर ऑफ गर्ल्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। सो दिस इज़ द इक्वेशन एंड I have taken this girls plus 8 is equals to boys. So girls, the number of girls is 5x plus 8 and number of boys is 7x. So when we will transport this 5x, it will be negative. So 5x minus 10x minus 5x is 2x is 8. So x equals to 8 upon 2 and x equals to 4, है ना। 2 1s are 2, 2 4s are 8, therefore x is 4. Now the question is not asking the value of x, they are asking the number of boys and girls. So boys will be 4 into 4 now, and girls, sorry, not 4 into 4, 7 into 4. Boys is equal to 7 to 4, 7 4s are 28, and girls equals to 5 into 4, यानी कि 20. Now they don't have to do anything with number of boys and number of girls in the class. They are asking total strength. So total strength is 8 4, 48 is the strength of class. Now move to question number 11. Question number 11 is saying Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather. यानी कि बाईचुंग के ग्रैंडफादर से उसके फादर की एज कितनी कम है, 26 ईयर कम है। यहाँ से एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाईचुंग, और बाईचुंग से 29 ईयर बड़े हैं
बाईचुंग के फादर। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल थ्री इज 135 ईयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ देम। अब जब हम इन तीनों की एज को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 135 ईयर्स मिलता है। यानी कि देखो, अगर बाईचुंग तो सबसे छोटा इन द है ना, बाईचुंग सबसे छोटा है और बाईचुंग से बड़े बाईचुंग के फादर हैं। देखो, सबसे छोटा है बाईचुंग, देन फादर, आफ्टर दैट ग्रैंडफादर। तो अगर हम यहाँ पर फादर की एज एज्यूम करेंगे तो ग्रैंडफादर की एज पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फादर की एज में समथिंग ऐड करना पड़ेगा। और क्या ऐड करना पड़ेगा, जो भी जितने भी ग्रैंडफादर बड़े होंगे, ग्रैंडफादर देखो, फादर इज 26 ईयर यंगर, दैट मीन्स कि फादर 26 ईयर्स छोटे हैं, तो ग्रैंडफादर तो 26 ईयर्स एल्डर हो गए ना, बड़े हो गए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 26 ऐड करेंगे। और जबकि बाईचुंग का है वो छोटा है कितना, 29 ईयर्स, तो हम फादर की एज से 29 ईयर्स सबट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो देखो, मैं एक बार फिर से लिख रही हूँ, दिस इज फादर, हियर इज ग्रैंडफादर, एंड द smallest youngest person is Baichung. Now suppose if the age of father is X and the grandfather is 26 years younger than Baichung, तो फादर की एज तो हो गई X और ग्रैंडफादर की क्या हो जाएगी, X + 26, और बाईचुंग 29 ईयर यंगर है, यानी कि फादर से अपने, तो X - 29। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हम लोग क्या कर रहे थे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को एज्यूम कर रहे थे, उसी तरह मैंने कुछ किया है फादर, बाईचुंग और ग्रैंडफादर की एजेस को पता करने के लिए। नाउ तो चलो, द सेम थिंग इज देयर, it is 26 not 29, it is 26 year. So move to next question, forward. Age of grandfather is X + 26, age of Baichung is X - 26. So see, X - 26, X and X + 26 is 135. So when we will add them, this 26 will be cancelled out with this 26. X and X is 3x. 3x is 135. So X is 135 upon 3. So 135 upon 3 will be 3 ones are 3, 3 4s are 12, and 3 5s are 15. So the age of father of Baichung is 45 years. Okay, so if the age of father is 45 years, so grandfather's age will be 45 plus 26 years. 26 years, so क्या हो गई, 71, and Baichung's age will be 45 minus 26, that is 19 years. So the age of all the three is given. If you want to check the answer is correct or not, just check them. 9 plus 1 10, 5 5, carry 1, 1 plus 4 5, 5 plus 1 6, and 7 and 6 is 13. So 135 here is the sum. So we are right. Now move to next question. Now again they are adding the concept of age ago, age after. Now what they are saying, 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his parents' age. 4 times his present age. What is Ravi's present age? क्या कह रहा है, आज से 15 साल बाद, 15 साल के बाद रवि की जो एज है वो अभी की एज से कितना हो जाएगी, 4 टाइम हो जाएगी। तो यानी कि अगर रवि की एज अभी प्रेजेंट एज x है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इट विल बी, 4x, है ना। लेकिन ये कब होगी 15 ईयर्स बाद, आफ्टर 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ। सो अगर हम जैसे फाइंड आउट कर रहे थे वो क्या था, x + 15,
अगर हम कहते हैं कि रवि की अभी प्रेजेंट एज x है, 15 ईयर्स आफ्टर वो क्या होगी, देन इट विल बी x प्लस 15, बट क्वेश्चन इज सेइंग इट इज 4x. That means both of the thing are right. Just we have to calculate and find the value of x. So here I have done the same thing. Let Ravi's present age be x. Age after 15 years is x plus 15. But according to question क्या कहता है, age after 15 year is 5x. So 4x and x plus 5 is same thing, equal thing, because that the trick is saying and that is the question saying. So we have to calculate them. X, when x will transport on that side, it will be negative. So 4 minus x is 3x is equals to 15. Now x is equals to 15 upon 3, that is 5. So let's and Ravi's present age is 5 years. Okay, now move to next question. Okay, this is the last question of this video. Thank you. If you find it helpful, please like, comment, share and subscribe to get the notification of our next video. Thank you. Have a nice day.